going to start, I would like to suggest you all my students that you should clean your hands properly, as we know that we are suffering from corona situation is worst, and that is why whenever you are at home and if you are outside of the home, then you must clean your hands, and you should suggest others and share my message to others. Thank you. I would like to welcome you all to my YouTube channel Anjana's Education. Today I am telling you, or I am discussing with you all, second unit of On Examination, which is written by Winston S. Churchill. So in the previous class we discussed about Dr. Welldon, who was the headmaster of Harrow English Medium School, who selected Mr. Winston S. Churchill, and due to his effort the writer got selected into Harrow School, and he was there in the Harrow School. And here the writer says his experience of examinations and how did he appear examinations and what more his experience we will come to know throughout the discussion किभली तांको साहाଯ୍य करथिला एग्जामिनेशन आउ मिस्टर वेल्डन को जो से सहजरे सिलेक्ट ही पारथिले हु डिडंट बिलीव इन पेपर मैनिफेस्टेशन जे पेपर रो माने आंसर पेपर रे कोन लेखा होतला से विश्वास न करि करि ही वाज looking people and he was looking after people through his inward eyes जे निजर अंतर चक्षु द्वारा अन्य को देखिबार साज माने देखि पारुतले and he was able to find the talent of someone and the writer was one of them के मिस्टर विंस्टन एस चर्चिल थिले अन्यतम जे मिस्टर वेल्डन द्वारा सफलतार सहित इंग्लिश हैरो मीडियम स्कूल हैरो रे से स्थान पाइथिले and he got a chance and he was selected from the bottom line and he secured third position from the bottom ro se third thile. But few days later those two students also didn't come to the school due to some reasons के रोगर शिकार हेले के छाड़ी के पळेले सर्टिफिकेट नहीं पळेले एमती हितला एंड शेषरे सबा शेषरे से स्थान अधिकार करथिले. सो वी आर मूविंग द नेक्स्ट यूनिट 2. I continued in this unpretentious situation. You can write the meaning of unpretentious जार अर्थ होची आशालीन अवस्था जो सिचुएशन को जो से खराब सिचुएशन सिक्योरिंग थर्ड पोजीशन और सिक्योरिंग लास्ट पोजीशन फ्रॉम द बॉटम रू लास्ट पोजीशन रे थिबा बा बॉटम रू फर्स्ट पोजीशन रे से थिले जोटा हम कहूचु ही वाज सिक्योर्ड लास्ट पोजीशन and it was his demerit that people used to comment him and समस्त तांको कमेंट करूथले एक्चुअली. एंड during that time we also discussed about his father तांग बापांकर कथा भी हमें कहितले he had just resigned from his post and people that is why used to comment him while he was marching in the school. जेतेबेले से स्कूल चली की जाउतले सेतेबेले लोक तांग कमेंट करूथले से भलिया गोटे सिचुएशन पूरा बहुत दिन धरि से फेस करूथले एंड it was too difficult task to bear that burden. से जो समस्या से संभाळिबाटा it was not that much easier task on the part of Mr. Winston S. Churchill. Then I am coming to his experience. However, by being so long in the lowest form, I gained an immense advantage over the clever boys. So what kind of advantage he got after being secured a last position in the class? Class रे शेष स्थान रहिबा सत्वे से किबळी भाबरे एडवांटेज पाइथिले as compared to those clever boys, those who secured first position, जो माने प्रमुख स्थान अधिकार करथिले तांको ठारू ये किबळी अधिक एडवांटेज पाइथिले. आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर जोटा हमें प्रथम वेल्डन कर विषय में जानथिले जे हेडमास्टर थिले हैरो स्कूल रे आ तांको सहाय्य करथिले स्कूल रे स्थान पाया पय. से बडी वन मोर पर्सन वाज देयर हु वाज टीचिंग इंग्लिश एंड हु टॉट देम इंग्लिश. सेठी गोटे जणे आउ जणे टीचर थिले से तांको ना थिला मिस्टर समरवेल. आई एम टेलिंग अबाउट दैट पर्सन. They all went to learn Latin and Greek and splendid things like that. All the brilliant students and intelligent students, those who were quite different from the writer, जो माने राइटर ठारू टिके अलगा थिले, they used to go to learn Latin and Greek and splendid things like that. लाटिन और ग्रीक शिखा पे से माने अन्य क्लास को जाउतले से माने अन्य क्लास करथले एंड दे डिडंट फोकस ऑन इंग्लिश. ऑन द अदर हैंड से माने इंग्लिश ऊपर फोकस कर नथले, इंग्लिश को छाड़ी अन्य सब्जेक्ट रे फोकस करथले. ऑन द अदर हैंड बट आई वाज टॉट इंग्लिश. द राइटर वाज टॉट इंग्लिश. से इंग्लिश ऊपर स्पेशली ही फोकस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश एनालिसिस. ए ऊपर से फोकस करले गाइडेड बाय मिस्टर सोमरवेल हु यूज्ड टू टीच हिम इंग्लिश. से
तांको इंग्लिश शिक्षा दूसरे सेटर सार थिले मिस्टर समरवेल. वी वेर कन्सिडर्ड सच डांसेस कहले स्लो लर्नर जो माने दुर्बल श्रेणी जो माने सिक्योर करथिले लास्ट पोजीशन इन द सेक्शन क्लास रे वन फोर्थ पोजीशन जो माने लास्ट पोजीशन थिले. So we were considered such dances that we could learn only English. So that is why they were assigned to learn English only because they were weak students. ସେମାନେ ଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା. and it was the duty of Mr. Somervell. Mr. Somervell को विषय ये कहते राइटर ए मोस्ट डिलाइटफुल मैन बहुत उत्साही लोक जड़े टू हुम माय डेप्ट इज ग्रेट जहाँपाई मु सब बेले मन मुझे मन रखी आउ पाखे चिर ऋणी हाउ was charged with the duty of teaching the stupidest boys the most disregarded thing, namely to write mere English. So he was assigned some duties to teach English to the weakest people. वीक बा दुर्बल श्रेणी पिला मानक इंग्लिश शिक्षा देवार दायित्व थिला मिस्टर समरवेल हाथ में. एंड ही यूज टू टीच अस इंग्लिश एंड क्या दौले स्टूपिडेस्ट बॉयज माने सबुठारु निर्बुद्धिया जो माने बहुत बोका श्रेणी थे जो मैंने शेष स्थान अधिकार करते सेक्शन रे टीचर थे. एंड ही यूज टू टीच वेरी आम कहीपर ही यूज टू टीच इंग्लिश वेरी वेल बहुत भल भाव में पढ़ाते. he knew how to do it and he knew how to teach English to the weakest student or to the stupidest students. केमती दुर्बलिया श्रेणी लोक मान इंग्लिश पढ़ा जाए पड़ो छुआ मान से विषय जानी. he taught it as no one else has ever taught and he taught them like no one had taught them before. एभलिया टीचिंग दौले ता पूर्व एभलिया टीचर के नथिले. that means as for the language added by the writer like the person Mr. Somervell was a great teacher who used to teach English to the stupidest boys of the class ba of the school सब stupidest boys मान को English शिक्षा नेबार दायित्व थिला कर Mr. Somervell. And the writer has mentioned here that he has never seen this kind of teacher before. आ पूर्व एभला टीचर से केबे देखिनान से कथा से कहचंती. And he has also mentioned that he has never been taught before. एभला शिक्षा से कोठारु पाई नांते कथा कहचंती. Not only did we learn English parsing thoroughly, but we also practiced continually English analysis. They started practicing English grammar and English analysis. Parsing koile grammar, and they all were being taught by Mr. Somervell. What a great teacher thile se, and he used to teach them English grammar and English analysis. English analysis उपरे तांको ध्यान दउथले कि मिस्टर समरवेल आ गोटे जिन होची कोथरे से ध्यान दउथले इंग्लिश ग्रामर उपरे. सो इट वाज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर एंड स्टूडेंट्स लाइक हिम टू लर्न इंग्लिश अति सहज से माने शिक्षा लाभ करि परथले. सो मिस्टर समरवेल हार्ड ऑफ प्लान टू टीच इंग्लिश टू द वीकेस्ट स्टूडेंट एंड स्टूपिडेस्ट स्टूडेंट. केमती दुर्बल श्रेणी पिला को इंग्लिश अति सहज पढ़ा जाय परिबो. ही हैड मेड अ प्लान एंड ही हैड हिज ओन क्रिएटिविटी. एंड व्हाट वाज दैट से गोटा किभली थिला देखिबा हम तांकर किभली से को पंथारे से पिला को टीचिंग दउथले इंग्लिश. मिस्टर समरवेल हैड ए सिस्टम ऑफ हिज ओन. तांकर निजर सिस्टम थिला या गोटा प्रोसेस थिला. ही टुक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस से कोन करथले गोटे बहुत माने विभिन्न प्रकार अर्थ थिबा गोटे सेंटेंस को नउथले बड़ सेंटेंस को नउथले. ही टुक एन एग्जांपल ऑफ ए लॉन्ग सेंटेंस एंड ब्रोक इट अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स. लाइक आमे जेमति जानिछु सब्जेक्ट कोटा, वर्ब कोटा, ऑब्जेक्ट कोटा, कंजक्शन कौन, डिजंक्शन कौन, डिसजंक्शन कौन, कंडीशनल सेंटेंस कौन, कंडीशनल क्लोजेस कौन, रिलेटिव क्लोजेस कौन, इनफाइनाइट वर्ब कौन, फाइनाइट वर्ब कौन. ये प्रति गोटे सेंटेंस गोटे लॉन्ग सेंटेंस नौते जो सब जिनस इंग्लिश ग्रामर ईच एंड एव्री एलिमेंट वाज देयर. सब प्रकार एलिमेंट थिला सेठी से भलिया गोटे लॉन्ग सेंटेंस नौते बाय विच ही कुड इजिली टीच इंग्लिश टू द वीकेस्ट स्टूडेंट. जहाँ द्वारा से कौन करेंगे वीकेस्ट स्टूडेंट मानक सब सेंटेंस प्रति जिनस विषय बुझे पारे. सो एभली कहते से गोटे बड़ सेंटेंस नौते आउ भांगिक देखते किभली भांगिक देखते भाग भाग करते. ही यूज टू डिवाइड इट इनटू वेरियस कंपोनेंट्स. केमती से सूचौले लोक माने स्टूडेंट मान को ब्लैक पेन रे किछि मार्क करते, तापरे रेड ब्लू पेन रे किछि मार्क करते, पुणी ग्रीन पेन रे किछि मार्क करते. जहाँ द्वारा इट वाज क्वाइट इजियर टू अंडरस्टैंड ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. जे बुझापी से सहज होता ब्लैक रे जोटा लिखाई से कंजक्शन है जोटा मनकर रेड रे लिखाई कह डिसजंक्शन भी कहीपर. आउ के जोटा लिखाई आमर ब्लू पेन रे आम कहीपर जे येस इट इज
कंडीशनल क्लॉजेस ये भाया जिन से गोटे लॉन्ग सेंटेंस सब जिन ही यूज टू शो इट टू द स्टूडेंट्स हाउ ए सेंटेंस इज फॉर्मड केमती गोटे सेंटेंस तैयारी होता है से कौन कौन थाए से सूचौले विभिन्न कलर मार्क करके विभिन्न कलर पेन मार्क करके इट वाज अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी व्हिच वी कैन नॉट गेदर द आइडिया एक्चुअली इट हेल्प्स अदर्स टू इजीली अंडरस्टैंड सो ये गोटे जिन से करुले इच हार्ड इट्स कलर एंड इट्स ब्राकेट आ समस्त जिनस को से ब्राकेट रखुले सूचेवाई इट वाज क्वाइट इजियर ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर मिस्टर समरवेल यह पक्षर भी सहज होता पिला सूचेवाई जे गोटे सेंटेंस कौन कौन कंपोनेंट्स थाए कि कौन कौन जिन सब एलिमेंट्स सब रिक्वायर होता है सो इट वाज काइंड ऑफ ड्रिल दे यूज टू डू इट डेली प्रतिदिन करुले ये ड्रिल यहाँ गोटे एक्टिविटी होता वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली एज आई रिमेंड इन द थर्ड फोर्थ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज एनी वन एल्स से थिले जो थर्ड फोर्थ पोजिशन रे फोर्थ सेक्शन थर्ड रे थिले से जो तांकर सेक्शन रे ही यूज टू डू इट रेगुलरली एंड 3 टाइम्स एज मच ऑफ इट से अन्य मान ठारू 3 टाइम अधिका करुले एक्टिविटी जोटा तांको अति सहज करुला टू लर्न इंग्लिश वेरी इजीली बहुत सहज इंग्लिश शिक्षा लाभ कर पारे आई लर्नड इट थरोली दैट मीन्स ही डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश इंग्लिश रे टिके भी कौन जिन ही डिडंट हैव एनी डाउट कौन डाउट नथिला दस आई गॉट इनटू माय बोन्स द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस देन ही केम टू नो तापर से जानिबा को पाइले जे हाउ एन ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस इज फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स आर प्रत्येक उपादान विषय से जानी पारुले एंड गोटे सेंटेंस किभली क्रिएट हो पारे से विषय से जानी व्हिच वाज ए नोवेल थिंग एटा थिला गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस एंड इट वाज अबाउट टू कम इन हिज यूज इन द नेक्स्ट किंतु परवर्ती समय रे तार उपकारिता एते आसला सेटा हमें नेक्स्ट यूनिट रे पढ़ी परिबा एंड व्हिच ए नोवेल थिंग एंड व्हेन in after years my school fellows who had won prizes and distinctions for writing such beautiful Latin poetry and pithy Greek epigrams had to come down again epigram कहले short and witty expression pithy कहले brief बोले संक्षिप्त epigram कहले short and witty expressions अति संक्षिप्त किसी जिनस लेखिक सूचेबा माने रूढ़ी बा किसी जिनसर एक्सप्लेन करवा दैट इज सेटा कहबा हमें सो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स got prizes and different rewards for writing Latin poetry and pithy Greek epigrams से माने प्राइज पाउथले तांकर लेखा पाई बट दे डिडंट गेट एनी रिवार्ड्स फॉर कॉमन इंग्लिश एंड दे वर बाउंड टू कम टू लर्न कॉमन इंग्लिश से माने को बाध्य थिले से माने इंग्लिश शिखिया को आसीबा पाई बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन द राइटर और विंस्टन एस चर्चिल जे आगुर ऑलरेडी ही हार्ड लर्नड इंग्लिश से सब इंग्लिश समस्त जिनस को भल भाव जानी देते एंड ही हार्ड नॉलेज ऑन द अदर एंड हिज फ्रेंड्स तांकर सांग माने दोज हु आर स्ट्रॉन्गर इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक लैटिन पोएट्री एंड पिथी ग्रीक एपिग्राम्स से माने डिस्टिंक्शन पाई जाते प्राइज पाई जाते किंतु दे डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश एनालिसिस सो लेटर ऑन दे वर बाउंड टू कम टू लर्न इंग्लिश परवर्ती समय से सांग मैंने आउ थे इंग्लिश शिखापी बाध्य होले कहीं यहाँ परवर्ती समय बहुत काम दे थाए इंग्लिश इज सच ए लैंग्वेज व्हिच हेल्प्स अस टू फाइंड आवर प्रोफेशन आमर प्रोफेशन पाइबारे आमर जॉब पाइबारे हमको बहुत साहाय्य करता है सो एंड इट ऑल्सो मेक्स आवर लाइफ और मेक्स आवर लाइफ सो इजी we become more smarter आमे अधिका स्मार्ट होता अधिका एक्टिव होता when we speak English and when we learn English so to earn their living to make their way I didn't feel myself at any disadvantage but he didn't feel any kind of disadvantage after being learned English naturally I am biased in favor of boys learning English the person writer Winston S. Churchill was biased in favor of boys learning English जो कथा कहछि you can write the meaning of biased पक्षपाती तांकर सपोर्ट रे जोटा हमें कहबा एंड हाँ आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश एंड समस्त को इंग्लिश शिखा से बाध्य कराउथले बा से चाहूले समस्त इंग्लिश शिक्षा लाभ एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस लर्न लैटिन एज
एन ऑनर लेटर तापर से कौन कहते आई वुड लेट द क्लेवर वन्स लियर्न लाटिन एज एन ऑनर एटा गोटे ऑनर बा सम्मान विषय होता है बट इट वाज नॉट दैट मच नीडेड बोलिक से भावुले बट लेटर ऑन ही वेंट टू लियर्न दैट एंड ग्रीक एज अ ट्रीट ग्रीक लैंग्वेज को भी से एते प्राधान्य दे नथिले लाइक ही गेव दैट मच कंसेंट टू इंग्लिश जमती से इंग्लिश को ध्यान देते से भली पिथि ग्रीक लैटिन सब्जेक्ट को एते ध्यान दे नथिले बट द ओनली थिंग आई वुड व्हिप देम but I would whip them for would be for not knowing English. I would whip them hard for that. It writer question, but only thing I would whip them. You can write the meaning of whip. W-H-I-P. W-H-I-P. We can write the meaning of whip. जार अर्थ चाबुक मारिबा बा गोटे प्रकार गोटे सचेतन बा सचेतक बोलिक आम कहीपर सो हियर इट इज मेंशन आई वुड मेक देम ऑल लियर्न इंग्लिश मु समस्त को चाहूली इंग्लिश शिखु एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वन्स लियर्न लाटिन एज एन ऑनर मु गोटे सम्मान विषय भाविक हिं पढ़ुली क्या लाटिन सब्जेक्ट को ग्रीक को गोटे स्पेशल प्लेजर गोटे गोटे स्वतंत्र आनंद पढ़ुली बोलिक कहले बट ही डिडंट गिव दैट मच कंसेंट टू लाटिन एंड ग्रीक बट ऑन द अदर एंड ही वाज experienced, he was matured and he was specialized in English language, English grammar, English analysis and होई प्रवर्त कहली गोटे सचेतन बा आम कहवा गोटे बहुत इंपोर्टेंट थिंग बट ओनली थिंग आई वुड व्हिप देम फॉर वुड बी फॉर नॉट नोइंग इंग्लिश से जो मैंने इंग्लिश शिखि नथिले तांको गोटे चाबुक प्रहार बा तांको गोटे प्रकार वार्निंग गोटे प्रकार माने आम कहीपर काइंड ऑफ कमेंट ही यूज टू गिव दोज पीपल से लोक मानक से भाया गोटे कमेंट से दौले सचेतन कर दौले फॉर नॉट नोइंग इंग्लिश दैट यू आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टीज इन द फ्यूचर इफ यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश जदि इंग्लिश शिखुन ताबले परवर्ती समय तुम बहुत असुविधार पड़ो व्हिप देम हार्ड फॉर दैट ताप से ही ट्राइड टू आवर पीपल दोज हु आर नॉट लर्निंग इंग्लिश से सचेतन कर दौले जो मैंने इंग्लिश शिक्षा लाभ कर सो दोज आर द सिचुएशन how did he learn English before that I mentioned how was he selected into Harrow रे केमती सिलेक्ट है से कथा जानली who helped him Mr. और डॉक्टर Welldon से तांको साहाय्य कले जहाँद्वारा से Harrow स्कूल चांस पाइले later on he learned English from the person Mr. Somerville who was specialized in English and he was assigned that duty to teach him लोक मान पिला मान इंग्लिश शिक्षा देवाई से सेठी नियोजित होते एंड द राइटर easily gathered knowledge from Mr. Somerville. I am telling about English language, English analysis, English grammar. English grammar एभली भाव सहजरे English topic, English literature एभली भाव सहजरे से काटरू शिखी Mr. Somerville. Thank you for watching.